Namaskar. This is Dr. Delnaz Jokhi from JG College of Commerce, Gujarat University. Well, this is my second lecture for the topic Association of Attributes. So welcome to the second lecture by Delnaz ma'am for unit number 1 for my FY students, Association of Attributes, lesson number 2. Let's begin. What are we going to study in this second lecture today? Let's see quickly. First of all, I will revise the important theory that we had done last time. What was that? Consistency of data. Then we will see the types of association, the methods of studying association, and of course, we shall do all the 3 different methods of studying association. Now, while my students, this lecture is very important for you. Why? Because we have made a special effort at JG to specially do Gujarat University latest sums with you. So this lecture will give you an holistic idea about the entire chapter of association of attributes and its sums and its methods, keeping in mind Gujarat University latest exam papers. So let's begin. First of all, most of you may have seen my first lecture on this topic, association of attributes. But in case you have missed, then I would recommend that you see the first lecture before this and then you continue with this. Of course, I will be revising with you, but no problem. Where will you look for my first lesson for this chapter? Well, on our JGCC's official YouTube channel, that is JGCC Academic. In that, when you see Dr. Delnaz Jokhi, you will find out on YouTube about the first lesson of this topic, association of attributes. Welcome. Well, a quick revision of what was done in the previous lecture. If you remember, we had seen that attributes refers to qualitative data. And whenever you wanted to find out association, relation between 2 qualitative data, this is the chapter we were using. We have prepared a table called contingency table or a 9-square table. And in that table, we had seen that if all the cell frequencies of the contingency table are positive, then आपका data सही है, आपका data correct है, right? गुजराती में कहे तो माहिती संगत छे. Okay, so if all the cell frequencies of your contingency table, which you learned with me in the first lecture, in the first lesson, if everything is positive, all the numbers are in plus, data is consistent. You can find out other methods for finding out the type of association. All right, but if any cell frequency in that table was negative, तो आप आगे सम नहीं कर सकते. माने सबसे पहले चेक करना कि is the data consistent or not. Only if the data is consistent can you go further to find out what type of relation is there between the 2 attributes that you are studying through the various methods जो आज इस lecture में, इस lesson number 2 में हम आज पढ़ने वाले हैं. So let's go. Sum number 1 of this lesson number 2. As I told you, today's sums are very much related to the latest Gujarat University 2019 and latest exam papers. So let's begin with a sum from your Gujarat University 2019 latest exam paper. The first sum is, oh yes, I would suggest that you have a pen and paper and a calculator with you. Because if you want to revise with me, I will appreciate if you do the sums with me. Don't worry, I will keep a slow pace for you. The first sum, please write down. In usual notations, for a 2 by 2 contingency table, alpha B is equal to 70 and alpha is equal to 50. What are you supposed to do in this sum? You only have to check whether the data given to you is consistent or it is inconsistent. So first of all,
on your screen is the contingency table I was asking you to remember. It looks something like this. A, alpha, B, beta, they are the attributes under consideration. AB, A beta, alpha B, alpha beta, all these things that you see in the bracket are the frequencies. If you remember, I'm sure you remember that this is a 9 square table. Uska dusra naam kya hai? Contingency table. Very good, my students. You remember that? That means you have revised the first lecture. You have seen my first lesson. Thank you very much. Okay. Now, in this sum of your Gujarat University 2019, आपको सिर्फ इतना चेक करना है. क्या चेक करना है कि डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है. कंसिस्टेंट कब होता है? जब आपकी सेल्फ फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव होती है. और इनकंसिस्टेंट कब होता है? मैंने आपको अभी बताया. Even if one cell frequency is in minus, is negative, you stop your sum right over there and you conclude that the data is inconsistent. So let's see. Substituting the values given in your sum. Check out. Alpha diya tha 50. Alpha B दिया था 70. Now I have taught you कि बाहर के मेन टोटल से ही आप अंदर का फ्रीक्वेंसी माइनस करना है. Right? See, what do you get? What do you get? Well, बाहर का टोटल अल्फा is 50. Look at the working. अंदर का फ्रीक्वेंसी अल्फा B is 70. 50 minus 70 कितना आया? Look at the red color over there. Alpha beta is minus 20. बोलो data consistent के inconsistent? I told you just 2 minutes before कि एक भी cell frequency अगर minus में आ जाती है तो data is inconsistent. आपको आगे कोई calculation नहीं करना. So this was a very short sum of 1 or 2 marks asked in the Gujarat University 2019 exam. Okay, simple. 50 बाहर का total minus अंदर का frequency, right? Okay, remember all the cell frequencies should be positive. और आपका alpha beta कैसा आया? Negative आया. Negative आया माने inconsistent. Inconsistent माने आप आगे sum नहीं कर सकते हो. Okay, my dear friends, this was a very short sum for the beginning so that you could revise the concept of inconsistency with me. All right, now. Before doing the next sum from your Gujarat University 2019 paper, well, you must know which are the various types of association, right? अगर आप दो attributes के बीच में कोई relation ढूंढ रहे हो, for example, a person who is honest, okay, or a person who is educated, is that educated person honest? तो यहाँ पे क्या हुआ? एक attribute आपका हुआ educated, दूसरा आपका attribute हुआ honest. याद है हमने ये लेसन नंबर 1 में सेम एग्जांपल लिया था. हाँ, सो ये दो एट्रीब्यूट्स के बीच में कौन से टाइप का एसोसिएशन है वो जानने के लिए दिस थियरी सुपर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि दो एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड माने रिलेटेड कब हो सकते हैं. तो उसके लिए इन अ वेरी शॉर्ट वे आई विल टेल यू दैट इफ टू एट्रीब्यूट्स दे अकर टुगेदर more number of times than they are expected to occur, then they are said to be some kind of association between them. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો તમારા જે બે ગુણાત્મક વસ્તુઓ છે જેને તમે ભણી રહ્યા છો, right? अगर वो दो attributes बार बार अकर कर रहे हैं, वो भी एक साथ, તમે જે અપેક્ષા રાખો છો એના કરતા they occur उनकी अवलोकित आवृत्ति વધુ છે. They come more and more number of times together as compared to what? As compared to what you were expected to. Okay? Then you can say that whatever the attributes you are studying, there is some kind of association between them. अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई association कितने टाइप के होते हैं? So let's see, the body will help you. There are 3 types of association. Number 1, positive association, as you see on your screen in red color. Number 2, negative association. Number 3, independence of attributes. Independent એટલે સંબંધનો અભાવ. Positive association कब होता है? तो let's read the yellow highlight together. The observed number of units who possess the two attributes are
more than the expected number of association. Okay, तो उन दोनों के बीच में अगर आपका observed number more times आता है expected से, तो you can say there is positive association. Do you see that green highlight? That is, your observed units are greater than the expected units. Okay, तो positive association हुआ, right? Negative देखते हैं, same चीज. अगर आपके observed number of units who are possessing the attributes are, इस बार क्या है? Less than की sign है. Yes, less than what? The expected number, right? तो अगर less than है तो negative association. So greater than sign tha, greater than more number of times, positive association. Okay, observed number of units, less number of times than expected, to negative. And as you see in number 3, if there is an equal to sign, if the observed number of units possessing the two attributes are equal, same છે, equal to what? The expected number, then the two attributes are said to be independent. Independent ગુજરાતીમાં શું કહીએ છે? કે બંને ગુણાત્મક વસ્તુઓ સ્વતંત્ર છે. Lack of association, कोई association नहीं है. All right, coming back to your Gujarat University latest papers. Well, Gujarat University 2019 और बहुत सारी एग्जाम्स में वो एक एक मार्क के लिए पूछते हैं कि give an example of positive association or negative association or independent. Well, देखो blue color का highlight. I will help you out with that. Positive association का example is literacy and poverty, or else second example can be education of women and success in marriage life. All these are examples of positive association. कहना क्या चाहता है? If you talk about literacy and poverty, okay, illiteracy એટલે ભણેલા ગણેલા નથી, and poverty એટલે ગરીબ છે. Okay, if illiteracy will increase, then poverty will also increase. Okay, the attributes will change in the same direction. Okay, so these two are the examples of positive association. अगर हम ये बात करें कि negative association का कोई उदाहरण दो, तो देखिए point number 2 में light blue color का highlight, literacy and criminality. Okay, अगर literacy बढ़ेगी, लोगों में सूझबूझ बढ़ेगी, तो criminality कम होनी चाहिए, right? Inoculation and attack of some disease, ये दूसरा example है. ये किनके example थे? Negative association के. Okay, और let us now take an example of independent. Independent at least swatantra, there is no association. Look at it. The gender of a person does not depend upon the success in the exam, whether it is a man or a woman, whether it is a boy or a girl. आप जितनी मेहनत करोगे एग्जाम में आपको उतना ही सक्सेस मिलेगा. सो आपका पास फेल इस पे डिपेंड नहीं करता आपका जेंडर क्या है. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ independence between attributes. I am sure थोड़ा बहुत तो समझ में आया. 3 types, that is positive association, negative association and no, none independent. Very good my students. Now coming on to, आपने देख लिया कि डेटा अगर कंसिस्टेंट है तो आप आगे मेथड्स की मदद से कौन से टाइप का एसोसिएशन है ये आप ढूंढ सकते हो. So let us quickly go through the 3 methods of studying association. Look at your screens. Method number 1, method of comparison of observed and expected frequency. Okay, અવલોકિત આવૃત્તિ અને અપેક્ષિત આવૃત્તિની સરખામણીની રીત, especially for my Gujarati medium students. Second method is known as proportion method. તમે લોકો મને શીખવાડ્યું હતું પ્રમાણની રીત. Method number 3 and the most important method, Yule's method. By the way, Yule's is a name of a very nice statistician. Aage as we study the methods, we will talk in detail about it. Okay guys, so there are 3 methods of studying association. All right, let's look at the first method, which was method of comparison of observed frequency and expected frequency. If you remember, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि observed और expected का बहुत महत्व होता है
for knowing the type of association, right? In this method number 1, observed frequency is denoted by AB, जो आपको टेबल से मिल जाएगा, and expected frequency in general is denoted by, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे? A का टोटल, ग्रीन कलर का हाईलाइट देखिए, B का टोटल अपॉन N. ठीक है? Okay, so if two attributes A and B are independent, then according to the probability theory, the expected frequency of cell AB would be A total multiplied by B total upon N. So ये आपका general formula है. अब हम जब sums करेंगे तो ज्यादा clarity आ जाएगी, but I would suggest that you quickly note down the formula. I'm sure you have that pen and paper with you. Khalsi bhi chahiye, le aana please. All right, let's see. Now, your observed frequency is AB. Your expected frequency is A into B upon N. ये आपको पता है, मैंने आपको already बता दिया. Now look at it. Something in blue color is there. There is a greater than sign, and on your right hand side, I have written positive association. Right? If AB, observed frequency, is greater than A into B upon N, your expected frequency. अगर greater than आया, तो कौन सा association हुआ? Positive association. Very good. अगर आपकी observed frequency AB is less than the expected frequency A into B upon N, तो क्या हुआ? Less than में क्या बताया था मैंने आपको? Negative association. Very good. देखिए, less than की sign भी green color में है, and the type of relation also with the color coding is there. Very good. If AB is equal to the expected, observed is equal to the expected formula, independent माने lack of association, स्वतंत्र छे संबंध, right? All right. So this was the first method. Observed frequency AB को compare किया expected के साथ. Don't worry. In the next 2-3 minutes हम sum करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये greater than less than कैसे use करना है. Don't worry. It is easy. Method number 2, proportion method. All right. Now, proportion method में आपको पता है proportion माने कोई ratio होगा, right? उसका formula कैसे याद रखोगे? Look at your screen. AB upon B एक side पे आया. If it is greater than A beta upon beta, तो कौन सा association हुआ? Positive. अगर AB upon B is less than A beta upon beta, तो negative association हुआ. I think now we are relating the signs to the type of association. Am I right? Yes, you are. Great. If AB upon B is equal to A beta upon beta, independent. Lack of association. There is no association. Formulas थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे. Right? Okay. Moving on to the third and the most important method. I had told you. Yule's method. Very good. Now, my dear students, this is the formula of Yule's method. It is known as Q. Q is the coefficient of association, capital Q. उसका formula क्या है? Quickly देख लीजिए. AB multiplied by alpha beta minus A beta multiplied by alpha B divided by upon AB multiplied by alpha beta plus A beta into alpha B. Now, this Yule's method theory is also often asked in other exams. Well, Q, as I said, Yule's method gives you a better answer as compared to the other two methods. क्यों ऐसा? तो इसलिए because Yule's method ना ही आपको सिर्फ type of association नहीं बताता, positive, negative वो सब तो बताता ही है, nature of association तो बताता ही है, but it also gives you the information regarding the degree of association. Degree of association means कि कौन सी हद तक वो positively related है, perfect relation है कि partial relation है. कैसे पता चलेगा? I already told you कि Q is the coefficient of association and it lies between, it's a coefficient, lies between -1 and +1. Okay? So उसके आंसर डेसिमल पॉइंट में भी आएंगे, राइट? देखो आपके न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है, राइट? माने डेसिमल पॉइंट्स में ज्यादातर आपके आंसर्स आएंगे, राइट? डिनोमिनेटर इज वेरी बिगर नंबर, यू गेट डेसिमल्स, राइट? गुड. सो अगर Q की वैल्यू +1 आती है तो परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन ऐसे बोल सकते हैं.
अगर Q का आंसर -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन है. That is what you will interpret. And if Q is equal to 0, you will say that the two attributes are independent to each other. Okay. कोई लोग मुझे अक्सर क्लास में पूछते हैं कि मैम अगर Q का आंसर 0.73 आया तो well, very good. 0.73 मीन साइन कौन सी है? प्लस की. माने वो हुआ पॉजिटिव एसोसिएशन, पर वो परफेक्ट नहीं है. वो परफेक्ट एसोसिएशन नहीं हुआ, वो पार्शियल एसोसिएशन हुआ. That is why Yule's method gives you a better answer. It tells you the information regarding the degree and the direction. So it's a better method. Please remember this formula. I am sure आपने formula लिख ही दिया है. Sums में बहुत काम में आने वाला है. So let's begin. Sum number 2 is also from your Gujarat University 2019 latest exam paper. Come on, I'm giving you 20 seconds. Please copy the sum. I will appreciate if you do the sum with me. Please write down the sum. I will read it for you. The following information is obtained for studying the association between permanent job and stress in life. Out of the total, 500 people are there in the survey. 300 have permanent jobs, and out of those 300, 100 people are stressed in life. That's it. Out of total number of people, 250 people are having stress in their life from the total number. Okay? Karna kya hai? You have to find out the coefficient of association between what? Permanent job and having stress in life. Okay? और आपका गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में यहां तक सम था, but since it's a university sum, हम पहली दो मेथड से भी ये सम करेंगे ताकि हम formulas समझ लें. So here we begin. In this method of studying association, step number 1 for doing any sum is आपको पहले decide करना पड़ेगा what will be A and what will be B. हम लेते हैं A is having a permanent job. उसको मैंने शॉर्टकट में नाम दिया है HPJ. Alpha will be people don't have a permanent job. शॉर्टकट मैंने लिखा है DHPJ. B is equal to stress in life and beta is equal to not stress in life. ये कहां से आया? क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था कि find the coefficient of association between permanent job. इसलिए हमने A को permanent job लिया and having stress in life. इसलिए मैंने B को stress in life लिया. Right? अल्फा बीटा कैसे आया? वो फर्स्ट लेसन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा. Right? Okay, great. Contingency table फटाफट बना देते हैं. चलिए, please prepare the table. I'm giving you 20 seconds. Quickly prepare the table. Yes, A alpha, B beta. Don't forget to write those brackets. They are your frequencies. बहुत important है. Okay, fine. Now, let's start substituting the values. Okay. It says that out of 500 people, माने capital N कितना हुआ, total कितना हुआ? 500. Very good. 300 have permanent jobs. Have permanent jobs को हमने क्या नाम दिया? Look over there. A. A is how much? 300. Very good. That's nice. And of them, 100 people are stressed. अब देखो ध्यान से, एक येलो कलर का कुछ फ्लैश हो रहा है 100 आपके लिए. Can you see the flashing yellow? Yes. ये 100 आप कहाँ लिखोगे? ये क्या कहना चाहता है? It says that out of 300 people who are having permanent job, उनमें से 100 लोग stressed थे. माने permanent job तो था A, पर stress भी था जिंदगी में. So A B की बात चल रही है together. So A B is equal to 100. I'm sure you have understood that. Very good. आगे क्या लिखा है सम में? देखते हैं. Out of the total number of people, 250 people are having stress in their life. देखिए स्क्रीन पे. B is equal to stress in their life. माने B का टोटल कितना हुआ हमारे लिए? 250. चलिए, जितना आपको सम में दिया था आपके गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में, वो सारी वैल्यूज हमने अंदर लगा दी. Right? And in lesson number 1, I had taught you
कि आप प्लस माइनस करके बाकी वैल्यूज ढूंढ सकते हो। कैसे? अल्फा कैसे मिलेगा? 500 माइनस ए 300 कितना होगा? 200। वेरी गुड। बीटा कैसे ढूंढोगे? एन 500 माइनस बी 250। 500 माइनस 250 कितना हुआ? कितना हुआ? 250। वेरी गुड। सो प्लीज चेक आउट द टेबल। ओके, सो 300 माइनस 100 किया 200 आ गया, 200 माइनस 150 किया 50 किया, 200 प्लस 50 किया 250 आ गया. So that is how plus minus करके we have already seen this in the first lecture, right? You get your contingency table. अब इस मेथड में आपको coefficient of association ढूंढना था, right? That is the Yule's method. Yes, सही आपको याद आया. Yule's method, Yule's gave us Q, the coefficient of association. उसकी वैल्यू कौन से दो नंबर्स के बीच में होती है? देखो आपने लिखा होगा between -1 and +1. Very good, my dear students. Come on. Now quickly substitute the values in the formula which you already know. Come on, quickly do that. Very good. AB 100, alpha B, beta 50, minus की sign, A beta 200, alpha B 150. सारी values formula में उस table से substitute कर दो. Calculation आपको करना है. You have the calci with you. Come on. I will help you out. Don't worry. What do you get? 100 into 50 will give you 5,000. And on the other side, 200 into 150 will give you minus 30,000. Okay? So do your calculations quickly. चलिए देखो देखो क्या आता है. You have a calci in your hand? Yes. Come on, quickly calculate. What do you get? Minus 25,000 upon 35,000. इसका डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करोगे you will get minus 0.7142. आंसर किस में आया? माइनस में आया. Am I right? Okay, so there is negative association between what? Permanent job and stress in life. Okay, okay. There is a negative association between permanent job and stress in life. I'm sure you understood the calculations कैसे हुए, right? You guys are very smart. Thank you. Now, sum यही रहने देते हैं. Let us understand the first two methods also. पहली मेथड का नाम क्या था? याद है ना? You had to compare what? The observed frequency with the expected frequency. Very good. अगर आपने formulas लिखे थे तो check करो. हमने क्या बोला था? Observed frequency, let it be equal to AB. Expected frequency A into B upon N. Right? पहले इतना ही लिखते हैं. Okay? अब उनकी values substitute करो. चलो, let's substitute the values quickly from table. Good. AB 100 मिला टेबल में से. A का total 300 multiplied by 250 upon N. Okay? Quickly calculate. Come on. 300 multiplied by 250 upon 50. कितना आया आपको? Please check. Please check. On your calcs, how much do you get? All right, very good. On one side you have 100 and the expected frequency comes to 150. Very good. Now my dear students, ये बहुत crucial part है. 100 और 150 को compare करना है. उसके बीच में कौन सी sign आएगी ये आपको decide करना है. Because आपको पता है कि अगर greater than sign आई तो positive हुआ, less than sign आई तो negative हुआ, equal to हुआ तो independent. Sign कैसे लगाओगे? Very important question. Yes. Ask yourself a question. 100 और 150 का relation क्या है? पहले 100 को base बनाओ, right? 100 is less than 150. So 150 થી ઓછું છે. Yes. 100 is less than 150. Yes, my dear students. You can see something flashing on your screen. I think you agree with me, right? Yes. So what happens is, what happens? Your observed frequency is less than your expected frequency. And when your observed frequency is less than your expected frequency, we talk about negative association. I'm sure आपको formulas याद है. Very good. So this is
ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन की मेथड। पहली मेथड कौन सी की हमने आज? यूज मेथड। एक और मेथड बाकी रह गई है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। चलिए, अब बेसिक टेबल तो वही रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन जो फॉर्मूला पूछा हो, जो मेथड पूछी हो, उसका फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो सम नंबर 2 ही है, बट इसके अंदर हम प्रोपोर्शन मेथड का फॉर्मूला यूज करते हैं। लुक एट द फॉर्मूला, यू रिमेंबर इट राइट? ए बी अपॉन बी और दूसरी बाजू ए बीटा अपॉन बीटा। कम ऑन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज क्विकली। डेसिमल पॉइंट में आंसर दो, बताइए क्या आता है। चलिए जल्दी कीजिए, 2 minutes, not even 2, 20 seconds. Come on, be quick. Okay, so if you substitute the values and you get the decimal points, क्या मिला? क्या मिला? 0.4 on one side, you can see the pink side, 0.8 on the other side. और मैंने आपको क्या सिखाया? आप अपने आप को एक सवाल पूछो, दिमाग में एक सवाल पूछो, 0.4 और 0.8 में क्या रिलेशन है? 0.4 is less than 0.8. 0.4 ની સરખામણી 0.8 વડે કરીએ તો થી ઓછુંનો સંબંધ છે. Yes, 0.4 is less than 0.8. Am I right? Yes. और लेस देन की साइन माने कौन सा एसोसिएशन हुआ? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव, लेस देन है तो वेरी गुड, नेगेटिव एसोसिएशन इफ इट इज अ लेस देन साइन। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। आपने एक चीज नोटिस किया, हमने तीनों मेथड्स यूज की, यूज भी किया, ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड भी किया और प्रोपोर्शन भी किया। तीनों मेथड से हमको बेसिक आंसर सेम आया कि देयर इज नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन your A, that was having permanent job, and your other attribute stress in life, right? So कोई भी method से आप sum करो, basic answer will remain the same. I hope you understood कि तीनों methods formula याद रखने हैं। less than की sign आई तो negative association, अगर greater than की आती तो positive होता, right? Okay, quickly moving on to sum number 3. Now as I told you कि आज हम latest exam के sums करने वाले हैं और मुझे ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का sum बहुत important लगा। Okay, इसके जैसा एक sum 2019 के पेपर में भी पूछा गया है। So let us do this short sum but very important sum. Right, now see, इस sum में आपको already बोल दिया गया है कि A और B के बीच में इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। जो डेटा दिया है, अगर आप टेबल के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको ढूंढना क्या है? आपको ए बीटा ढूंढना है। देखो रेड कलर मैंने किया टेबल में, राइट? हाँ, ए बी 60 इज गिवन, वो लिख दिया मैंने। बीटा इज 150, वो भी लिख दिया। बी इज 120, आई हैव रिटन दैट आल्सो इन योर टेबल। नाउ यू गाइस आर वेरी स्मार्ट। B plus beta is equal to n, that is 270, ये भी आपको मिल गया। बट बाकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। You only have this much information what you are seeing on your screen. तो आप यूज मेथड तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो, राइट? तो आप मेथड कौन सी यूज करोगे? ये सम क्यों पूछा गया है यूनिवर्सिटी में? Why am I doing this sum with you? Well, the important concept is you have to select an appropriate method on the basis of the data given to you. डेटा हमारे पास सीमित है, लिमिटेड डेटा है हमारे पास यहाँ पर। तो डेटा जो है उसमें हमको ए बीटा ढूंढना है और ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के जनरल फॉर्मूला में क्या आता है? ए बी ए इंटू बी अपॉन एन। ए बीटा उसमें नहीं आता जनरल फॉर्मूला में, राइट? ओके, तो बचा कौन सा मेथड? लुक एट योर स्क्रीन, प्रोपोर्शन मेथड। फॉर्मूला तो याद ही होगा। वेरी गुड। बेसिक फॉर्मूला क्या है? ए बी अपॉन बी, ए बीटा अपॉन बीटा। पर इन दोनों के बीच में आपने वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट? 60 अपॉन 120, ए बीटा अपॉन 150। ए बीटा क्यों छोड़ दिया? बिकॉज ये शॉर्ट सम है। देखो देखो वहां पर फाइंड ए बीटा, मैंने रेड कलर में किया है वहां पर। ए बीटा तो आपको ढूंढना है, पर उससे पहले
आपको सम में दे दिया गया है. लुक एट व्हाट इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन. येलो कलर में लिखा है, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है क्या? डेटा इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र. एंड व्हेन द डेटा इज इंडिपेंडेंट, हम कौन सी साइन लगाते थे, याद है आपको? इक्वल टू वाली साइन. वेरी गुड, दैट्स सुपर. दैट इज हाउ ये इक्वल टू वाली साइन आपके स्क्रीन पे आती है. अब तो इजी हो गया. 60 अपॉन 120 इज इक्वल टू ए बीटा अपॉन 150. ए बीटा आपको ढूंढना था. चलो ए बीटा को सेपरेट कर लो. 150 को ऊपर 60 के साथ उस साइड मल्टीप्लाई कर दो. चेक आउट. देखो ए बीटा इज इक्वल टू 60 multiplied by 150 upon 120 तो था ही. चलिए कैसे पे कैलकुलेट कीजिए. इट्स वेरी इजी. कितना आया? How much did you get? Yes, you get 75 precisely. So independent था, पता था, formula आपने select किया on the base of data given to you और a beta की value आपको मिल गई. A beta is equal to 75 as you can see on your screen. Okay, I hope you have understood. ये सब important था इसलिए मैंने यहाँ पे add on कर दिया है. ठीक है? All right, great. Now, again from your Gujarat University 2019 paper, a very important short sum. Sum number 4 on your screen. लिख दीजिए चाहे तो, important है. 2 मार्क के लिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस टाइप के सम्स. Find the value of AB if the attributes A and B are, क्या लिखा है? What is the relation given to you? लिखा है ना इंडिपेंडेंट है. हाँ, इंडिपेंडेंट है माने कौन सी साइन बीच में आ गई? कम ऑन, नाउ यू नो दिस मेथड कि ग्रेटर देन तो पॉजिटिव, लेस देन तो नेगेटिव और इंडिपेंडेंट माने इक्वल टू की साइन आएगी. प्रिसाइसली माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड. सी आपके दिमाग में आया कि इक्वल टू की साइन आएगी. सुपर. ढूंढना क्या था? ए बी. दिया क्या है आपको? एन दिया है, ए दिया है और बी दिया है. तो बहुत इजी हो गया आपके लिए. ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड का फॉर्मूला तो आपको याद ही है. क्या था? ए बी और उस साइड पे ए का टोटल, बी का टोटल अपॉन एन. और ये इंडिपेंडेंट है तो बीच में कौन सी साइन आए आपने बताया? इक्वल टू. चलिए फटाफट फॉर्मूला लगा दीजिए. ए बी का आंसर मिल जाएगा. लुक एट योर स्क्रीन. इंडिपेंडेंट है, दिया गया है. So, applying the formula of observed and expected frequency method, AB is equal to A 50, B 150 and 500. तीनों नंबर्स देखो आपको क्वेश्चन में उस साइड पे दिए गए हैं. देना वहां पर देखो उस साइड पे दिया हुआ है. वेरी गुड. कैलकुलेट करो कितना आया. जीरोस कैंसिल, 5 कैंसिल, क्या बचा? 15. कैलसी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. जीरोस कैंसिल किए, 5 कैंसिल हो गया, बचा 15. Simple. So AB is equal to 15. That is what is your answer. I hope you understood all the Gujarat University sums very well. Very important. Keep practicing. All right. चलिए. Now I have a quiz for you. Let's see. अगर आपने lesson number 1 और lesson number 2 थोड़ा ध्यान से सीखा है मेरे साथ, थोड़ा ध्यान से अगर सुना है, the quiz will be easy for you. Let's start. How many types of association can be there between two attributes? Types कितने हैं? सोचो. आंसर क्या है? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 9, ऑप्शन C none of the above. बताइए. How many types of association are there? Yes, very good. Mr. Smiley says there are 3 types of association. Option B is the answer. क्यों? कौन से? Positive association, negative association and lack of association. Very good. So there are 3 types of association. Super. Congratulations. Number 2. How many methods are there to study association between two attributes? This is very easy. How many methods are there? A, B, C, D. What's your answer? Yes. Mr. Smiley again says, the big smile on the face. There are 3 methods of studying association. कौन से? चलो revise करो मेरे साथ. This is how, through the quiz, I revise my lesson with you. Yes. पहला वाला,
observed and expected frequency method, very good. दूसरा कौन सा था? proportion method, very good. और तीसरा और सबसे important कौन सा था? best method कौन सी थी? Yule's method, very good. So there are 3 methods of studying the type of association between two attributes जो आपके BCom के syllabus में है. Great, great, that's very nice. Question number 3. अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आप सही दोगे पक्का. Let's check. If the data is inconsistent, then can we find the type of association between two attributes? Data आपका inconsistent है, माने कुछ माइनस में आ रहा है, तो क्या आप सम आगे करके type of association ढूंढ सकते हो? Yes या no? सोचो. Inconsistent है तो types of association ढूंढ सकते हो between the attributes? नहीं ढूंढ सकते. Yes, मैंने आपको 15-20 मिनट्स पहले ही बोला था कि जैसे कुछ याद आया गुजरात यूनिवर्सिटी का 2019 का पहला सम मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको बोल दिया था वहां पर ही, हाँ, कि अगर कुछ भी माइनस में आ जाता है, अगर आपका डेटा इनकंसिस्टेंट है तो आप आगे सम नहीं कर सकते हो. और अगर आप आगे सम नहीं कर सकते हो तो टाइप्स ऑफ एसोसिएशन हाउ विल यू फाइंड आउट? करेक्ट. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये लेसन नंबर 2, स्पेशली कीपिंग इन माइंड योर गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर 2019, आपको समझ में आया हो. I have tried to cover the entire chapter of association of attributes, the sum side, all the 3 methods in a nutshell. Okay? Happy learning to all of you. Thank you very much, everybody. I hope you understood what I taught you. Okay? Happy learning. God bless you all. And yes, always practice the chapters well. Okay? Thank you. Happy learning. God bless you. Namaskar.